Hello everyone, I'm Sudipta, welcoming you all to Vedang Classes powered by Vedang Institute of Technology. So, how are you all? Previously, like morning रे 65 MCQs cover up कर देथिले आउ 35 MCQs हमर रेस्ट रही जाइतले ताकू कवर अप कर देले ओडिसा रा पॉलिटी एंड गवर्नेंस आपण मानको पई क्लियर रिवीजन इज क्लियर तो ताकू हम आज कवर अप कर देबा मैम का आज स्टार्ट जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ राधे राधे जय जगन्नाथ गुड इवनिंग ऑल एंड आउ कौन अच्छे प्रणाम सतरे अरे वाह कौन कहल तुम मैंने हाँ आरआई एग्जाम रे पड़िबो ना सयारा मूवी रे कौन डायलॉग अच्छी हीरो कौन कहूची हीरोइन कौन कहूची एगुडा निहाती पड़िबो सत्य स्टार्ट करिबा ना स्टार्ट एक्चुअली हमरो 10:05 5 मिनिट वेट करू पिला टिके जॉइन हला पर ही स्टार्ट हुए तो 10:05 रे ही स्टार्ट हुए टू बी वेरी ऑनेस्ट टाइम ही हो गया सी कि किछि भी देखियो लागि वेब सीरीज टाइम ही नै एतिकी कंटेंट कंटेंट एंड कंटेंट बनैबारे ही टाइम पड़ोछि किशोर मु तो नाही क्लास रे किशोर तम मेसेज मु देखि छी गुड इवनिंग आउ कहार ना छाडी देछि कुआ टिके प्लीज पायल प्रतीक्षा ओके सेम पिंच good evening ma'am how was your day don't ask me about my well spent day मैम आपण खाई सारेणी हाँ मु खाई सारे चश्मा एक्चुअली पुणी क्लास सरला पर भी पुणी कंटेंट बने पड़ुछ ना बसिकी ए डिस्प्ले टिके ब्राइटनेस पेज त मानकु कम लागुथबो डिस्प्ले ब्राइटनेस भी कम हेछि अदरवाइज आखि पोडुछ बहुत जोरे पुणी कंटेंट बनेबा को पड़ुछि मॉर्निंग क्लास पुणी तापरे क्लास में तो पेशेंस रहुनी आखि बहुत जोरे पोडुछ मैम आज डे रे काम थिला सो बहुत मिस करूथिले मैम सीरियसली ओ माय गॉड जाओ ओके 50 पिला हे गले हमरो सो बेसिक 50 रु ही हम स्टार्ट करे क्लास एंड ऑब्वियसली 4 मिनिट त हे गला सो स्टार्ट करिबा क्लास क्लास मु स्टार्ट करूची कंसंट्रेट ओवर द क्लास ओनली चश्मा बाय डिफॉल्ट पिंधिया को पड़े मो आखि खराब नाही ओके मो आखि खराब नुह कि मु चश्मा पिंधि छी ओके सो चश्मा रु बाहर की क्लास ऊपर फोकस कर सी ऑलरेडी 65 डिस्कस करी थिले मॉर्निंग रे 66 नंबर क्वेश्चन ओके हाय हाय सुबकांत दास हाय हेलो नमस्ते भलरे रुहंतु समस्ते आसा हाय हेलो छाड़ो जय जगन्नाथ कुआ एडा कियोडे लिखि दिला ना हमर कमेंट रे यस लेट्स स्टार्ट यस अति स्टार्ट करंतु व्हिच पंचायत लेवल ऑफिशियल मेंटेन्स ग्राम पंचायत अकाउंट्स इन ओडिशा व्हिच पंचायत लेवल ऑफिशियल्स मेंटेन ग्राम पंचायत अकाउंट्स इन ओडिशा को लेवल लो होची को मते ऑप्शंस कोन अछि ना ग्राम रोजगार सेवक विलेज अकाउंटेंट पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और ग्राम सभा सेक्रेटरी व्हाट विल बी द राइट आंसर कोटा राइट आंसर हबो मते कहिलो राइट आंसर कोटा हबो जति हमें लाइक ऑप्शन ए को देखिबा सपोज ऑप्शन ए को देखिबा ग्राम रोजगार सेवक ताकू किए डील्स करिवो ना ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन हमें पढिथिले द एमजी एनआरई जीए this is a scheme this is a model ताकू किए मॉनिटर करूची डील्स विथ द एमजीएनआरईजीए ताकू मॉनिटर करिवो विलेज अकाउंटेंट ताकू किए करूची विलेज अकाउंटेंट आमर तो ओडिसा रे सेमती सिस्टम नाही कि विलेज रे ओटा अकाउंटेंट सिस्टम थाए बट कर्नाटका लाइक तांको स्टेट रे टाइप रो मेंटेनेंस होची ओडिसा रे एटा नाही ग्राम सभा सेक्रेटरी एमिति किछि ऑफिशियल पोजीशन ही नाही एमिति किछि ऑफिशियल पोजीशन नाही सो राइट आंसर कोन हबो ना पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आपण माने को भितरु केते जण पीओ हेइथिबे केते जण अप्लाई भी करिथिबे सो आपण माने जानतो पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कोन कोन वर्क रहउची नेक्स्ट देखो
नेक्स्ट देखो आज रैपिड फायर नहीं रैपिड फायर टाइटल थिला बट मॉर्निंग क्लास टाको आज कवर अप करि देबा हैला बिकॉज़ पॉलिटी एंड गवर्नेंस रा बहुत इंपोर्टेंस रहउची नेक्स्ट देखो व्हिच फ्लैगशिप प्रोग्राम डेवलप्स प्लानिंग पावर टू ग्राम पंचायत इन ओडिशा व्हिच फ्लैगशिप प्रोग्राम डेवलप्स प्लानिंग पावर टू ग्राम पंचायत इन ओडिशा आज वैकेंसी आसुची पीओ अच्छा सत्य तुमको सब लिकेज खबर सब आगुआ मिल जाए कथा कौन ये गोटे अच्छी चिन्हा पिला ना कौन रिक्वायरमेंट आसीबो लाइक जते अधिक हमर वैकेंसी आसीबो हम सेते अधिक क्लास करिया खुशी रा कथा ना ओके सो राइट आंसर देखो 5T मॉडल हबो कि 5T मॉडल हबो या फिर आमो गांव आमो योजना हबो या फिर BSKY हबो या फिर मुख्यमंत्री युवा शक्ति स्कीम कहा अंडर रे जीवो कहा अंडर रे जो हमर फ्लैगशिप प्रोग्राम अछि डेवलप होची द प्लानिंग पावर टू ग्राम पंचायत इन ओडिशा अंडर व्हिच प्रोग्राम अंडर व्हिच योजना को योजना रे हम कहि परिबा ना आमो गा आमो योजना अंडर रे जीवो ओके सो आमो गा आमो योजना कोन ना फर्स्ट हमर कोन कहि परिबा दैट इज द आवर विलेज आवर प्लान तो छडो बट इट एम्पावर्स कोन करूची ना ग्राम पंचायत इन द ओडिशा टू प्रिपेयर द विलेज लाइक डेवलपमेंट प्लान धीरे धीरे कोन आम विलेज को भी स्मार्ट विलेज करबा लागि तार डेवलपमेंट पई प्लान्स करूची किए ना विथ द पीपल्स कोन पार्टिसिपेशन एथरे करूछन कोडा आम गांव आम योजना लोक मानकु से गांव रो लोक मानकु नै कि डेवलपमेंट करूची 5T मॉडल हम सेपरेट कर देबा दिस इज अ गवर्नेंस अप्रोच ताकु सेपरेट कर बीएसको भी आपण मान जानचंती बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना हेल्थ ऊपर रिलेटेड करबो मुख्यमंत्री युवा शक्ति योजना ताकु आपण माने रिलेट करिवे कोन यूथ एंड स्किल डेवलपमेंट ऊपर जंती DDUCKY हैला ता सहित रिलेट करि परिबे आपण कोन ना मुख्यमंत्री यूथ शक्ति योजना ठीक अछि नेक्स्ट देखो who act as the returning officer during panchayat elections in Odisha tell me who act as the returning officer मैम डर लागु छौ 10 days for exam मैम पर सत्य भाई रा मामू हां की who acts the returning officer during the panchayat elections in Odisha ऑप्शन कौन अच्छी ना बीडीओ तहसीलदार कलेक्टर और पंचायत सेक्रेटरी राइट आंसर कौन पचाची ना लाइक ऑफिसर ड्यूरिंग द पंचायत इलेक्शन ने की हमर कोन हु एक्ट एज द रिटर्निंग ऑफिसर ड्यूरिंग द पंचायत इलेक्शन इन ओडिशा का हमें करूचे इन पंचायत इलेक्शंस द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का हमें नहीं परिबा ना ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर इज डेजिग्नेटेड एज द रिटर्निंग ऑफिसर for the responsible जो माने भी नॉमिनीज आसीथिबे से मानको लाइक कोन हम कहि परिबा ताकर सिक्युरिटी हैला केते वोट काउंट हैला ए सब जिंस को किए मॉनिटर करंती किए ऑथराइजिंग पावर का पाखे थाए ना वीडियो का पाखे थाए तहसीलदार हमर ऑलरेडी आपण माने तहसीलदार का सहित रिलेट कर दबो ना रेवेन्यू सहित रिलेट कर दबो रेवेन्यू सहित रिलेट करि परिबो ओके रेवेन्यू मैटर्स जहा भी हैला नॉन पंचायत इलेक्शंस रे यांकर काम कलेक्टर को आपण मान जानचंदी डिस्ट्रिक्ट लाइक हमर कोन इलेक्शन ऑफिसर एक्ट एज अ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर नॉट द रिटर्निंग ऑफिसर पंचायत सेक्रेटरी को आपण मान करि परिबे आपको रिलेट करंत अगर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ओके देन पंचायत सेक्रेटरी को आपण करिवे जस्ट फॉर मेंटेन्स द रिकॉर्ड्स एंड ऑल पंचायत लेवल जेते रिकॉर्ड्स पेपर सहिला हमर कोठी कोन न्यू स्कीम हैला कोठी रास्ता काम हैला कोठी पोखरी खोला हैला केते जण भत्ता पाइले ए सब सेक्रेटरी रो काम पंचायत सेक्रेटरी ताकू ऑथराइज करिके ताकू प्लान करिके रखिबो हैला नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा जी गुरुमा संग्राम तोला पोस्ट रहिबो रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट तहसीलदार यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द लाइक कोन न्याय पंचायत इन ओडिशा न्याय पंचायत हमें कहा कहूचे एंड कोर्ट लाइक स्टेटमेंट हमर राइटली याकू डिफाइन करूची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द न्याय पंचायत इन ओडिशा कोर्ट हमें कहि परिबा देखो ऑप्शन कोन होची द डेलीवर क्रिमिनल जस्टिस को हमें कोन कहि परिबा इज दैट ट्रू न्याय पंचायत ओनली कोन हैंडल करे ना सिविल डिस्प्यूट्स को हैंडल करे न्याय केस रे आसुची माने हमर जते सिविल पीपल रहउचंती से मानक पई कोन सिविलियंस मानक पई ए पंचायत आसे सो दिस इज ओनली फॉर द सिविल डिस्प्यूट्स
कोठी सिविल डिस्प्यूट्स अछि कि दे आर पार्ट ऑफ रेगुलर जुडिशियरी, दे आर नॉट एक्टिव इन ओडिशा, दे फंक्शन अंडर द ओडिशा हाई कोर्ट। कौन हबो ना दे आर नॉट एक्टिव इन ओडिशा। ओडिशा रे कौन सेटा एक्टिव अछि कि द न्याय पंचायत वे आर प्रपोज्ड अंडर द आर्टिकल केते आसीबो ना 39A, अंडर आर्टिकल 39A रे एटा प्रपोज हेछि। कहि परिबा कोथि पई ना फॉर एक्सेस टू जस्टिस दे आर नॉट करेंटली फंक्शन इन ओडिशा, अनलाइक अदर स्टेट रे हमर कोन एटा फंक्शनिंग अछि, बट इनिशियली ओडिशा रे एटा एक्टिव थिला, बट करेंट स्टेज रे एटा हमर एक्टिव नाही। आगुर जानिथिबो ग्राम सभा बसंती, मुखिया मान बसंती, जो कोन कोन 5 जन भद्र लोक बसई के हमर कोन पुनी सरपंच मेन थिबे, तांकर गोटे ग्रुप थिबो मैनेजमेंट रे, से 5 जन मेंबर रखिथिबे, से माने जोटा कहबे दैट इज द फाइनल डिसीजन above all. So this is all about the thing. And which of the following is true about Nyaya Panchayat in Odisha? Nyaya Panchayat रे एटा हमर थिला जोटा कि एबे एक्टिव नाही, but still this is true about the Nyaya Panchayat. Okay, आज दिन जाक पढुछु मैम, आपण टायर्ड होचंती कि फुल एनर्जेटिक रे पढुछु? मैम आपण टायर्ड हो नहांती कि फुल एनर्जेटिकली पढुछु? मो टायर्ड भी तो मानु पाठ के पढेयो, गजब पिला सब ए पाठ पढेले भी कहछ काई टायर्ड हो नांती पाठ पढौचंती। आ जेबे टायर्ड हे कि पाठ ना पढे भी सेबे कहबे कि हम पाठ पढौ नांती, तो करिवो तो मनिष करिवो कोन को। द मिनिमम एज टू कंटेस्ट पंचायत इलेक्शंस इन ओडिशा इज, पंचायत इलेक्शन में स्टैंड करिबा लागि गोटे मिनिमम क्वालिफाइंग एज रहिबा दरकार। से मिनिमम एज ता केते रहइबो? अच्छा जगन्नाथ, श्योर न्यूज, द न्यूज इज श्योर अबाउट यस मु कंटिन्यू करूची को मिनिमम एज केते हबो? मिनिमम एज केते हबो? 18 वर्ष कोनटा वोटिंग पचारिची? वोटिंग पचारिची कि पंचायत इलेक्शन में स्टैंड करिवा लागि, पंचायत इलेक्शन रे आइदर जे कोनसी वार्ड मेंबर हो, ग्राम पंचायत लाइक सरपंच पई हो, नायब सरपंच पई हो, आमे तले स्टैंड करूचे, इन दैट कंडीशन ईयर शुड बी 21 years, not 18 years. 18 is just for the voting and 25 18 आम रिलेट करिवो कोथि पई ना वोटिंग पई मिनिमम एज रहउछ हमर कोन ना 18 years। देन 25 आमे जानछो कोथि पई ना रिक्वायर्ड फॉर द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज, तो लोकसभा सहित को रिलेट करि दियो। लोकसभा देन 30 years, 30 years कोथि पई ना फॉर राज्यसभा, लोकसभा पई 25, देन 30 years कोन रहइबो ना राज्यसभा पई। मन रख परिबो तो एति की एज ना एति की भी हबनी, नहले एग्जाम भी हबनी हो कोन। नेक्स्ट देखो क्विज प्लानिंग, नेक्स्ट देखो which planning body works with PRIs, that means Panchayat Raj विषय in Odisha for rural development scheme. Which planning body works with the PRIs in Odisha for rural development scheme? ऑप्शन कौन अच्छी देखो, नीति आयोग अच्छी, नीति आयोग, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिशन डीपीसी, ग्राम सभा और पीआरआई प्लानिंग बोर्ड सेपरेटली अच्छी। कोटा हबो नीति आयोग हमर कोन करे ना दिस इज द सेंट्रल लेवल पॉलिसी थिंक टैंक हमें कहउचे। नीति आयोग को हमें कोन कहउचे ना दिस इज द पॉलिसी थिंक टैंक। ओके पॉलिसी थिंक टैंक बोली हमें कहउचे, जे कि डायरेक्टली हमर कोन पीआरआई सहित किछि रिलेशन नाही। तो देखिबा ग्राम सभा कोन पई होबनी, बिकॉज़ इट पार्टिसिपेट इन द प्लानिंग एट द विलेज लेवल, बट जदी इंप्लीमेंट कथा कहिला बट डजंट हम कोन ताकू कंसोलिडेट करिबानी, that will not consolidate with the district plans, directly से participate करिवो, they can just participate, लेखि परिवो just participate। okay the PRI planning board आपण मान भितर भाबुथिबो PRI पर क्वेश्चन आछो, दी PRI planning board भी थिबो। इस PRI planning board that is not an official constitutional or legal body, एमिति बस गोटे बोर्ड माने से माने मेंबर्स मानु को एसोसिएट करिवा लागि, मैनेजमेंट ठीक से करिवा लागि, सेटा गोटे नॉन ऑफिशियली बॉडी। सो अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा अंडर एंति किछ न थाए। तो राइट आंसर हमें कोन देखिबा ना डीपीसी, द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी। एटा आर्टिकल 243 अंडर आसुचे, आई थिंक 243 जेड बोथे, बट नॉट श्योर, टिके आर्टिकल 243 गोटे थाए कोन लाइक बोधे मते लागुची जेड बोली, टिके कंफर्म हिचबो तापर। ओके ता अकॉर्डिंग हमर कोन ना अर्बन रे हो, रूरल एरिया रे हो, हमर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी विल बी द हेड एंड से ताको कोन ना मेंटेन करिवो। आर्टिकल रो प्रिएम्बल को नेकी गोटे क्लास मैम डेफिनेटली करिबा,
एग्जाम हमर सरी जाउ तापर करिबा हला एग्जाम सरी जाउ तापर करिबा टिके डिटेल स्टडी करिबा एबे जति के एग्जाम पा इंपोर्टेंट ओनली एमसीक्यूज ही कवर अप करिबा थ्योरी क्लास तो हे ही पारुनी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मौसम महानंद ओके नेक्स्ट देखो which Odisha scheme uses PRIs to provide sanitary napkins in rural areas so mate which Odisha scheme uses PRIs to provide sanitary napkins in rural areas कोटा हबा को मते ऑलरेडी कहिची जतरे के हमर कोन लाइक स्कूल रु इंटरमीडिएट लेवल जाय हमर कोन सैनिटरी नैपकिन को स्कीम अंडर प्रोवाइड करा जाय जोटा कि 2018 ने लॉन्च हेतिला 2000 यस वेरी गुड खुशी स्कीम अंडर हेतिला 2018 रे लॉन्च हेतिला 2018 ने लॉन्च हेतिला खुशी स्कीम कोन करूतला ना दैट एंश्योर्स द फ्री सैनिटरी नैपकिन्स टू द स्कूल गोइंग गर्ल्स थ्रू द हेल्थ वर्कर्स इनके आशा कर्मी हेले एंड अंगनवाड़ी दीदी माने हेले तो एमान को थ्रू रे कोन पठा जातिला मिशन शक्ति हमें ऑलरेडी जानि तो स्वयं सहायक गोष्ठी तांकर लेडीज मान को नेकी मिशन शक्ति हेची द एसएचजी ग्रुप ताकू पादछि ममता योजना कोन करूछि मिशन शक्ति सहित आपण माने एठी गोटे लिखि दियंतु बस एसएचजीएस तो आपण मानकर स्वयं सहायक गोष्ठी मिलि जिवो सेल्फ हेल्प ग्रुप ओके देन ममता योजना सहित आपण माने रिलेट कोन करथले ना मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ आपण माने एठी ममता सहित मार ममता और कोन मन रखि दबा द मैटरनल and child health okay maternal and child health very good then निर्माण श्रमिक योजना आपण माने जानि थिबे एटा फोकस कहा ऊपर करूची ना द वेलफेयर ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स निर्माण घर निर्माण करंती की करंती ना कंस्ट्रक्टर करंती कंट्रैक्टर करंती तो हमें कोन कहि परिबा ना ओवर द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स दिस इज द स्कीम फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्कर Is that clear? Next देखो एटा टिक मारली तो राइट आंसर यस खुशी स्कीम नेक्स्ट देखो how is the पंचायत सरपंच इलेक्टेड इन ओडिशा पंचायत सरपंच केमिति इलेक्ट होंती ओडिशा रे क्वेश्चन देखो ऑप्शंस देखो बाय ग्राम सभा द्वारा होंती बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय डायरेक्ट इलेक्शन बाय द वोटर्स बाय पंचायत मेंबर्स माने कहा को इलेक्ट करंती पंचायत रे जो वार्ड मेंबर्स माने अछंती से माने नायब सरपंच को इलेक्ट करंती एटा मन रखिथा किंतु डायरेक्ट सरपंच को कोन ना लोक माने ही इलेक्ट करंती डायरेक्ट सरपंच का द्वारा ना बाय डायरेक्ट इलेक्शन बाय द वोटर्स मन रहिबाती की ओके नेक्स्ट देखिबा यस डायरेक्ट मु निजे वोट दे जाए अच्छा अब आमे माने हम हाथ को काटी की पके दो हम निजे वोट दे जाए नेक्स्ट क्वेश्चन इन ओडिशा सरपंच आर अकाउंटेबल टू व्हाट फॉर द कलेक्टर फॉर द ग्राम सभा पंचायत समिति और पीआर डिपार्टमेंट कलेक्टर को तो आपण माने ऑर्डर आउट कर दियो एंड पीआर डिपार्टमेंट को ऑर्डर आउट कर दियो दीटा ऑप्शन अछि ग्राम सभा पई ना पंचायत समिति पई को मते ग्राम सभा पई हबो ना पंचायत समिति पई हबो पंचायत समिति मु जानछि पंचायत ना आसीबो माने सरपंच को माने रिलेट करबनी कोन एमति हेई परिबो बट पंचायत समिति कोन हुए ना दैट ओनली ओवरसीज द डेवलपमेंट वर्क बट नॉट द डायरेक्ट सुपरविजरी अथॉरिटी ओवर सरपंच पाखरे पंचायत समिति रे किछि वर्क डायरेक्ट विजन करबा लागि राइट न थाए डायरेक्ट राइट हमर कोठी रहिबो ना ग्राम सभा ऊपर रहिबो ग्राम सभा को मॉनिटर करि परिबा हम कहि परिबा द ग्राम सभा मॉनिटर्स एंड इवैल्यूएट and functioning of the sarpanch and can raise objection and also clarification पाई भी से notice provide करि परियो so ग्राम सभा ऊपर higher authority की रहबे ना हमरा सरपंच रहबे so ग्राम सभा समिति सभ्य ना सुनिछ केबे समिति सभ्य इलेक्शन हुए सुनिछ तो ताकर हेड रहबा की ना हमरा पंचायत समिति रा समिति सभ्य ओके मैम आपनका टॉकिंग स्पीच सो स्वीट ओ माय गॉड थैंक यू एते भी प्रशंसा करने मु क्लास पढेबी ना तुम मानका आगे लाज करी कहला चलो नेक्स्ट देखो व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड पंचायती राज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस टेल मी व्हिच कॉन्स्टिट्यूशंस अमेंडमेंट मेड पंचायती राज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशंस अकॉर्डिंग होची
मैम मॉर्निंग रे क्लास लास्ट रे आंसर देबी कहि की क्लास सॉरी वाला काइंडली क्लास लास्ट 1 मिनिट टाइम देबे प्लीज श्योर अमित श्योर इट्स फॉर यू ओनली श्योर नेक्स्ट देखो कौन करिबा को कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग होची 52nd 73rd 86 और 74 ताकू टिके रिलेट रे देखिबा कौन कौन रहउची फर्स्ट कौन होची 52nd डायरेक्ट रिलेट टू कौन ना एंटी डिफेक्शन लॉ 52nd को आमे डायरेक्ट रिलेट करूचे कहा सहित ना एंटी डिफेक्शन लॉ सहित एंटी डिफेक्शन लॉ सहित अगेन 86 को कहा सहित आमे रिलेट करूचे ना दिस इज डील्स विथ द राइट टू एजुकेशन 86 थे हमें कौन कहिबा ना दिस इज राइट टू एजुकेशन कहि चलो 74 कहि चलो तुम माने भी कमेंट रे कहिबा दरकार ना 74 काउंटर हम रिलेट करूचे 74 हमें कौन रिलेट करछे ना पर्टेन्स टू अर्बन लोकल बॉडीज का सहित ना अर्बन एंड लोकल बॉडीज अर्बन लोकल बॉडीज क्लियर सो राइट आंसर कौन हबो ना 73rd हबो राइट आंसर 73rd केबेट अमेंड हेतिला कहिछि ऑलरेडी कहिछि 1992 रे एटा अमेंड हेतिला केबे हेतिला 1992 रे जोटा कि गोटे प्रॉपर केबे 24th अप्रैल 1993 रे एटा कोन केम इनटू फोर्स कहितली मॉर्निंग रे मने पडुछि 24th अप्रैल 1993 रे केम इनटू फोर्स बट फर्स्ट ताको अमेंड हेतिला केबे ना 1992 रे हेतिला मने पडुछि किछि तो टोटल हमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ द पंचायती राज इफेक्टेड फ्रॉम द डेट 24th अप्रैल 1993 बट केबे रजिस्टर हेतिला केबे अमेंड हेतिला 1992 रे हेतिला इज दैट क्लियर नेक्स्ट फॉर यू which article of the Indian constitution empowers the governor to promulgate ordinance in Odisha को मते ऑर्डिनेंस कथा आसिला डायरेक्ट त माने गोटे वर्ड को मार्क करिवो जत्ते बेले भी गोटे गोटे की वर्ड मन रखो सेटा सेही कॉन्स्टिट्यूशन रो ही बिलोंग करछ से की वर्ड जत्ते बेले आसीबो बस सेंटेंस ताको थोड़े रीड कर दबो बुझी गेलो ऑर्डिनेंस को धरो द की वर्ड इज दैट एंड ताको हमें डायरेक्टली रिलेट करबा कहा सहित ना 213 सहित रिलेट करबा वेरी गुड 213 सहित अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 213 empowers the governor of a state to issue the ordinance when the legislative assembly is not in the session तबेले सेशन रे हमर लेजिस्लेटिव असेंबली रो हेड प्रेजेंस नथिबे इन दैट केस हमर कोन ना गवर्नर ताकू रूल करि पारिबे इज दैट क्लियर आर्टिकल 154 कोन कहछि मते कहिलो आर्टिकल 154 अकॉर्डिंग हमर स्टेट रे कोन लॉ अछि ना दैट विल डील्स विथ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट ओनली एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट माने रखो executive power of the state under article 200 हमें कौन कह परिबा article 200 आगे हमें कौन कह परिबा ना that concern the assent to the bill by the governor जेते बेले गवर्नर खाली लेखो assent जो जानि परिबा assent of governors that means governor over bill okay so bill ऊपर को लेके assent governor provide करिवे that is under article 200 161 हमें कौन कहूचे ना ग्रांट द गवर्नर पावर टू pardon और हमें कहि परिबा कोन कम्यूट द सेंटेंस हमें कहउतले ना सेंटेंस ताको चेंज करि परिबो सेटा को आर्टिकल अंडर रे जदि स्टेट रे किछि न्यू सेंटेंस ऐड करिवार अछि स्टेट रो लॉ अकॉर्डिंग प्रोविजन को चेंज करिवार अछि सेटा कहा पाखरे पावर अछि गवर्नर को पाखरे पावर अछि तो को आर्टिकल अंडर सेटा चेंज करि परिबे को आर्टिकल अंडर ताको से राइट मिलछि ना आर्टिकल 161 अंडर रे मने रहिबो 161 मन रखो 1 एंड ओनली राइट कहा पाखरे रहबो आगे रे 1 पछरे 1 सो 1 एंड ओनली राइट कहा पाखरे ना गवर्नर को पाखरे रहबो कि से किछि भी सेंटेंस चेंज करि पारिबे स्टेटमेंट चेंज करि पारिबे इज दैट क्लियर नेक्स्ट देखो नेक्स्ट फॉर यू टेल मी which constitutional body supervise the elections to Panchayati Raj institutions in Odisha which constitutional body supervises the election to Panchayati Raj institutions of Odisha options are here Odisha State Election Commission Odisha Public Service Commission Gram Sabha या फिर Ministry of Panchayati Raj what will be the right answer कौन चलछि तम मानकर एठी
कहा पाई के डिस्टर्ब हैला तो पाई समस्त डिस्टर्ब होचंती सो तुमको मु कहली सो डोंट क्राई ये पुणी कांदिला ठीक टिके जदी कमेंट सेक्शन देखुनी त माड़ पिटी ही जाउछ तुम माने ना माने ऑफलाइन जदी क्लास करा हेई था ना भाबु त मन भितर अधा पिला डेली डेली हॉस्पिटल जाई चार्ज छुंता चेरी मु तुमको भूलिनी तुमको मु केमिति भूली पारी इज दैट पॉसिबल इन दिस बर्थ आई कैन नेवर फॉरगेट यू it's just like impalpable okay it's nothing next देखिबा may I come in already आसी सारी की aptr may I come in को आउची ना की which constitution body what will be the right answer the Odisha State Election Commission what na Odisha State Election Commission कौन करूचे ना article 140 ना sorry article 243k according article 243k under article 243k what a special provision मिलुची काहाकू the state election commission conducts and oversees the PRI selection पंचायती राज लेवल ले जति के हमर election conduct हुई okay OPSC already जानते conduct the recruitment exam ताकू आपण माने रिलेट करिवेनी इवन ग्राम सभा को आपण माने चेंज करि देबे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज दिस इज द सेंट्रल बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज को पंचायत लेवल को आनी बनी दिस इज द सेंट्रल बॉडी लिखि दोछ okay this is the central body doesn't conduct the state PRA elections next what is the minimum age again मु जदी बुढ़ी देखा न गली तम माने मते कोन मानिबो कि टीचर बोली कुहर त मानि छ कि तेनु मु पिंदी के आछि चश्मा कि त माने मते मानिबो तो मान मते देखो what is the minimum age to contest for the position of sarpanch in Odisha position of sarpanch in Odisha the options कौन होछ देखो 18 21 25 और 30 क्वेश्चन आसीथिला केटा रिपीट हेछि के क्वेश्चन इट्स ओके मते अमित स्पेशली मते अमित कहि चंदी कि चश्माटा पिंदी के आसिया को मैम जदि अपन चश्मा पिंदी के आसीबे ने देन मु क्लास को आसीबे that's why I am here with my spec okay that is 21 years already 18 कहithili eligible for the voting period like voting pai am eligible haba after the age of 18 and 25 is for the MP and MLS 30 is for the like again Rajya Sabha pai jiba okay next dekho okay Mission Shakti was transformed into a separate department in Odisha in which year Mission Shakti गोटे separate department हे गला ओडिसा रे केबे हेतिला obviously कहा पीरियड रे हेतिला ना हमरो चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक का पीरियड रे हेतिला द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक का पीरियड रे हेतिला तो को टेन्योर रे हेतिला एग्जैक्टली को ईयर रे हेतिला मारी दियो ढाबा सबुतिक वर्ष अछि मार दियो ढाबा जोटा इच्छा होची आखी बुझी की मारा अछि चलो आखी बंद करी सब मारो 29 देखो टिके शिव प्रसाद को देखो लिखाई 2029 हम गाँ रे के आंसर देइथिला ना तमे प्रथम हां मैम लास्ट क्लास रे आज पछरिबा हां निहाती करबा आज टाइम देबी डोंट वरी तो कौन हबो राइट आंसर ना 2022 रे ओके वाइस प्रेसिडेंट ओके मिशन शक्ति सुजाता प्रधान चेयरमैन थे अच्छा मिशन शक्ति whatever so 2022 रे हमर कोन हेतिला ना द ओडिसा गवर्नमेंट मेड द मिशन शक्ति as a separate department on the 1st June 2022 exactly date तो एग्जाम रे न आसी पारे but year is important आपको मन रखो but जेतु रिसेंट एबे हेसी 2-3 इयर्स भीतर तो मे बी डेट आसी पारे सो मन रखिता 1st जून कोन मन रहबनी केते जन को भीतर तमरो बर्थडे बा 1st जून ने थिबो किस बेस्ट फ्रेंड मानकर बर्थडे थिबो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मानकर बर्थडे 1st जून ने थिबो ताकू रिलेट करी मन रख परिबनी कि मिशन शक्ति जार गर्लफ्रेंड का बर्थडे 1st जून ने थिबो से भाबियो कि एई 1st जून ने जन्म हेछि बोली तार एते शक्ति हो ना नेक्स्ट चलो नेक्स्ट जीबा सॉरी who presides tell me हाँ सुभद्रा पैसा मु पाइबिनी की कथा तमे कहउछ सुभद्रा पैसा हम पाइछि पूरा 10,000 पाइछि कोन कहउछ नेक्स्ट देखा who presides over a joint sitting of the Odisha Legislative Assembly
and the legislative council if council existed. Legislative council in that case to the council exists hela in that case. So who presides over a joint sitting of the Odisha Legislative Assembly and the Legislative Council? किए करूची? First देखा governor करूछंती की or chief minister, speaker of the assembly or no provision for joint sitting. Joint sitting ପାଇଁ କୁହ ମତେ governor କଣ କରିବେ ନା governor ତ first of all କଣ ଆମର କୌଣସି commission like କଣ chairmanship କରିବେନି एमिति assembly related only ଆମେ speaker को सहित छाडिदेबा तो governor can summon or dissolve the house only summon पठेबे नहले house को dissolve करिवे okay yes summon पठेबे और house dissolve करिवे एग्जाम केते दिन पिलांकर कोन होची देखो तो गवर्नर हैला देन चीफ मिनिस्टर को हमें कोन करिबा ना हेड ऑफ द गवर्नमेंट सो आंकु भी हमें कोन एलिमिनेट कर देबा ऑप्शन सो स्पीकर ऑफ द असेंबली इज दैट ट्रू स्पीकर कोन करिवे की ना स्पीकर ओनली प्रिसाइड्स ओवर द असेंबली बट नॉट एनी जॉइंट सेशन व्हिच इज नॉट एप्लीकेबल इन द स्टेट लाइक जॉइंट सेशन पाई स्पीकर विल बी नॉट द राइट आंसर हमें कोन देखबा न जॉइंट सेशन आसुची इन दैट केस हमर कोन होची ना no provision for the joint sitting as of now Odisha has a unicameral legislature jete bele bicameral legislature asi jibo in that case jodi Rajasthan ram ro achi in that case amara kono state system da asi jibo as of now amara nahi even in the bicameral legislator bi amara to nahi but still Odisha jodi ani ba chahiba different state re different protocols thai so there is no provision for the joint sitting like of state legislator in the constitutions रे ही हमरो joint like कोन session पाई एमिति नाही provision okay D yes D concept ता टिके बुझो D हे की काई हो जरती next देखो the governor of Odisha addresses the legislative assembly under which article tell me governor of Odisha addresses the legislative assembly वोमेन एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट रे बोते मिशन शक्ति अछि महिला कमिशन रे अछि बुझिला मिशन शक्ति है कि महिला कमिशन सहित मिस जाई छी तमे माने फोकस कर जे डिस्टर्ब करू तमे ता मेसेज पढुछ बोल डिस्टर्ब होछ ना तमे कमेंट सेक्शन में काई फोकस करछ तमे आंसर दा खाली A B C D टाइप कर दे छोड़ दियो इज दैट क्लियर डिस्टर्ब होनी तमे देखो द गवर्नर ऑफ ओडिशा addresses the legislative assembly under which article ना under article 176 आंसर कौन देइछो article 154 देइछो आंसर article 154 देइछो कौन भाई article 154 deals with the executive powers of the governor बट एटी क्वेश्चन ने कोन executive power कथा पचारि छि कि क्वेश्चन ने executive power कथा पचारि छि कि Article 176 of the Indian Constitution कौन कहछि ना that will deals with the special addresses by the governor to the legislative assembly generally legislative assembly रा deal के सब करे speaker करंती but governor इटी कौन कहछि ना special address करि परिबो at the कौन commencement of the first session रे for each general election and at the first session of the कौन each year of first session ने सकाळे तडा रिवीजन करिथिले कि each year of first session जतेबेला आसीबो ताको addressal पई किए लीड ताको किए नेबे ना गवर्नर नेबे बाकी सब रोल होची हमर स्पीकर पर 175 कौन करूची yes only deal with the executive power very good किशोर right गुडी डिस्टर्ब कोची ताको उड़े दियो को आर्टिकल 175 कौन करूची ना allows the governor to address and send messages to the house only address करिवे and messages send करिवे that only the work of under article 175 and 200 already त माने जानिछो कोन गवर्नमेंट कर assent रिक्वायर होची कोठी ना तू like पास करिया पई पुनी प्रेसिडेंट को पाखो को हमर आर्टिकल 200 is that clear राती 10:30 ना हाँ राती 10:30 रे तो मानकर एक्जाम जाऊनी सीरियसली एग्जाम दबो तो तम माने मते कहीं लागुनी एग्जाम दबो बोली तम माने खाली एग्जाम रे खराब करी कि आसो तापरे तम माने कथा मु बुझुची which major scheme in Odisha ensures free treatment of up to kete na up to 10 lakh for women in कौन empaneled hospital उठी empaneled hospital
ना गुड्डू प्रधान मु करिनी तो कुआ which major scheme in Odisha ensures free treatment of to 10 lakhs for women in empaneled hospital कहा अंडर आमे जाउची ना BSKY अंडर रे जाउची BS सॉरी BKKY कर देली सॉरी BSKY वाला देखाला दैट इज बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना दैट इज द BSKY केबे हेइतला लॉन्च केबे हेइतला एग्जाम रे ईयर इज ए मस्ट जोटा कि रिसेंट हमर इंपोर्टेंट स्कीम किछि अछि लॉन्च हेइतला तो year is must तो 2018 रे हेतिला provides what na free healthcare service up to the 10 lakh for women and 5 lakh for the men माने पडुची BKKY जोटा हेटा कोन भूले भाबनी कि BSKY टा को BKKY लिखिची गाइस दैट इज द बिजु कृषक कल्याण योजना बिजु कृषक कल्याण योजना का पे ऑब्वियसली फार्मर्स मानक पई स्पेसिफिकली फार्मर्स मानक पई हेल्थ केयर सहित रिलेशन नाही किछि मिशन शक्ति बहुत पिरा हमर मिशन शक्ति भी देखि दैचंदी मैम आपण आम साथी अच्छा एग्जाम खराब हबार टिके भी चांस नहीं जहा हो एते कौन तुम मानकर भरसा देखिकी मोर कॉन्फिडेंस पूरा बूस्ट हो जाउची सो मिशन शक्ति हमें कौन करि परबे ना फोकस द वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ओनली नॉट द मेडिकल बेनिफिट्स दे आर हैविंग निर्मल ओडिशा निर्मल माने सफा सफा रो आपण माने कौन रिलेट करिवे ना सैनिटाइजेशन is that clear next देखिबा टोटल जीके पार्ट रो मैराथन करंतु मैम काली अछि काली तमरो टोटल जीके पार्ट रो मैराथन लाइक 100 क्वेश्चन अछि 100 क्वेश्चंस तमानकर अछि मिक्स करके आछि हैला मिक्स करके काली भी तमरो अछि 2 टा रु 5 टा 3 घंटा कंटीन्यूअसली पूरा रेडी हेके आसीथिबो 3 घंटा कंटीन्यूअस क्लास काली अछि 2 टा रु 5 टा पुनी मॉर्निंग रे अछि 9 टा रु 10 टा काली तो माने खाली जीके ही पढिबो व्यस्त होनी मौसुमी महानंदिया कौन कमेंट कर दिलो रे हाँ एबे चेंज हेछि ना मोहन सरकार पई हाँ हाँ मोहन सरकार सब ट्राई करछन चेंज करिया पई बट बीएसकेवाई ए पर्यंत एक्टिव अछि बीएसकेवाई एक्टिव अछि व्यस्त होनी तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ओडिशा इज द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट फीस ग्रीवेंस redressal digital initiative across all district गाइस हम वॉइस क्लियर आसुची ना या फिर लाइक चेंज केके है कि किछि वॉइस आसुनी तो वॉइस एकदम क्लियर जाउची तो तुम माने एवरी वर्ड प्रोनाउंसिएशन क्लियरली जानि परछ तो एते आवर्स कोन करिबा हमर स्टार्ट हेछि ना मैराथन आपण माने ऑलरेडी जानिथे मैराथन सब दिन जन जन टीचरकर 2 टा रु 5 टा सेशन रहउची तो मंगलवार काली मोर अछि मैम इंडियन ज्योग्राफी और हिस्ट्री केबे हबो काली राति रे रैपिड फायर इंडियन ज्योग्राफी हिस्ट्री रो मिक्स क्वेश्चन आनिबी हैला जत्ते बच्चा बच्चा क्वेश्चन जत्ते मैक्स टू मैक्स पाइबी इंडियन ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री काली राति रो पाई रेडी फॉर रैपिड फायर पाई हैला Amit, you just focus on the class. Let them to do what they want to do. Okay, you focus on the class. So, कौन हबो Odisha is the first state to implement quiz grievance redressal digital initiative across all districts. That is कौन ना मो सरकार केबे लॉन्च हेतिला ना 2019 रे लॉन्च हेतिला मैम केबे लॉन्च हेतिला 2019 रे हेतिला मो सरकार बाय द गवर्नमेंट कौन माय गवर्नमेंट बोली ताको कहै जाय इज अ फीडबैक बेस्ड गवर्नेंस हमें कौन कहि परिबा दिस इज फॉर द गवर्नमेंट हमारा प्रॉपर्ली वर्क होउची ना नाही जस्ट टू हैव द फीडबैक फ्रॉम द कौन हमारा सिविलियंस ते मानन को हमारा एटा आसुची फीडबैक to the government okay yes ma'am मानंतु मो सरकार 5T अंडर आसुची yes मो सरकार 5T अंडर रे ही आसुची मो सरकार 5T अंडर रे आसुची ई सेवा कोन कहूची मते को ई सेवा रिलेटेड टू व्हाट दिस इज द जनरल ऑनलाइन सर्विस पोर्टल हमें कहि परिबा द जनरल लाइक ऑनलाइन सर्विस पोर्टल इज द ई सेवा ओडिशा 1 कोन कहि परिबा ना दिस इज द यूनिफाइड सिटीजन सर्विस डिलीवरी पोर्टल this is for the citizen delivery like service this is the portal is about the Odisha 1 e-municipality that is about the urban like kon ame koi pariya urban service time only rural area amar to municipality nahi na so targets the urban civic service
डेलीवरी सिस्टम सब जिनस हमर डेलीवरी ऊपर अछि कोटा सिटीजन सर्विस डेलीवरी रहउची कोटा अर्बन सिविक लाइक सिविक डेलीवरी रहउची एंड अबाउट द ई सर्विस द जनरल लाइक ऑनलाइन सर्विस ओके नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो which of the following is not a feature मैम कौन मैम सब एग्जाम पाई एज लिमिट 42 इयर्स हे गला कि हां ओडिसा गवर्नमेंट रो सब एग्जाम पाई 42 इयर्स हे जाई सब एग्जाम मींस को एग्जाम विषय पचारछ को एग्जाम विषय तन पचारिया को चाहूछ राइट आंसर को जय जगन्नाथ 5T रा फुल फॉर्म कोंदु 5T रा फुल फॉर्म मींस नवीन सरकार को वाला 5T नवीन सरकार को वाला 5T तो और T फॉर ट्रांसपेरेंसी थिला एंड वेट देखुची फर्स्ट 5T जो थिला फर्स्ट T फॉर गोटे ट्रांसपेरेंसी थिला ओके देन अगेन हमें कहि परिबा द T फॉर आई थिंक टेक्नोलॉजी transparency teamwork yes technology then T for teamwork sequence तम माने चेक करिवो sequence तमे माने चेक करिवो okay then transformation yes अच्छा time and transformation yes transformation मोर मने थिला time दा भूली जाईथि the transformation okay then another is the time okay so transparency technology teamwork and the time and the what yes very good पिला तो comment section में हमर लिखि जाले yes transparency technology teamwork time and transformation हाँ सतीश always updated okay काहे डिस्टर्ब कोचे क्लास मझरे कहलो चलो 84 क्वेश्चन नंबर कौन देखुचे 84 question number right answer will be what panchayat's power to legislate ame kon koi pariba which of the following is not a feature of the 73rd amendment implemented in odisha 73rd amendment रे बाकी सब implement हेची जेमिति कि हम कोन direct election to panchayat this is also a key feature of the 73rd amendment state finance commission that is a mandatory under the amendment of the distribution funds to the panchayat then reservation for women in panchayat to हमर कोन 33% reservation थिला ताको कोन like extend करी कि 50% हे गला but initially केते परसेंट reservation थिला 33% थिला women मानकर तापरे 50% करा जायछि याको भी भूलिबनी previous केते थिला and latest केते करा जायछि don't forget it okay next देखिबा sorry सतीश कहला काई सॉरी करछ sorry for what मु तो किछि कहिनी तमनको who appoints the advocate general of odisha advocate general of odisha को की appoint करंती who appoints advocate general of odisha मैम मैराथन क्लास रो स्केड्यूल टिके शो करिवे कि सब क्लास रो इटा मिताली आई एम रियली सॉरी फॉर दैट मैं एक्चुअली से स्लाइड डाणी आई एम रियली सॉरी फॉर दैट really sorry for that else what can I do but Monday तो पिंकू सांकर थिला Tuesday means काली मोरो ही अछि after that कार मोर exactly मन में किरण मैम मो कमेंट्स देखु नांती जमा किरण तम कमेंट्स देखुची एमाने सब जो गोटे इमोजी लगे दो नांती समान पर जानि जंदी ट्रिक केमिति मैम कर आई कैचिंग हबो तो तमे सेमती गोटे कोन लगे कि कमेंट काडा जेमती मु पढी पारे okay so who appoints the advocate general of odisha that is governor like on under article kete rahibo article 165 according amara rahibo under article 165 of the constitution the governor appoints the advocate general who is the highest law officer in the state advocate general is the highest law officer in the state मन रखो एमिति क्वेश्चन आस परिबो who is the highest law officer in the state governor cm speaker or कोना advocate general के रहबे ना advocate general रहबे चश्मा ही खोली दोची जा
चलो क्वेश्चन करो अबे चश्मा खोल देली नेक्स्ट देखिबा द ओडिशा हाई कोर्ट was formally inaugurated in which year? The Odisha High Court was formally inaugurated in which year? Yes, Mitali, right. मते को who appoints the advocate sorry एटा next question टा की yes तो मते next question जो अछि को the Odisha High Court was formally inaugurated in which year या पई तो फर्स्ट क्लास रे पंगा हे जाइथिला so को 1948 रे हिथिला right 1948 रे हिथिला किछि प्रॉब्लम नाही मो आखि पूरा भलो अछि तम मान को मेसेज मते टाइम टाइम करिके देखा जाउची कोन मते अंडर प्रूफ करियो ना कोन भूल हे गला या चश्मा लगै कि आ लगैबिनी प्रॉमिस आ लगैबिनी तम मान को राणा आ लगैबिनी एबे चला ओडिशा हाई कोर्ट वाज इनागुरेटेड केबे हेतिला ना 26 जुलाई 1948 26 जुलाई 1948 रे आफ्टर द स्टेट वाज सेपरेटेड फ्रॉम द बिहार इन 1936 मन रहिबो ड्यू टू हेल्थ इशू अच्छा वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन देते ड्यू टू हेल्थ इशू अच्छा आशीष नाइस इंफॉर्मेशन मैम इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पीडीएफ शेयर करिवे इंपोर्टेंट रही छे सेशन टा मु एटार पीडीएफ सकाळे तमन को सेंड कर देथांदी बिकॉज़ 35 टा क्वेश्चन ए स्लाइड रही जाय ताको कंप्लीट करी कि तमन को पीडीएफ शेयर करी बोली करना थी हैला मु कहा पर रागिनी मते इच्छा हला मु चश्मा थोई देली क्लास को फोकस करो 1947 हमें कहि परिबा कि द ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस ताको मन रखि परिबो 1950 रे हमें कोन कटले ना द ईयर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस एनफोर्समेंट हमें कहि परिबा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्समेंट हेतिला केबे 1950 रे क्लियर 1949 ताकू रिलेट करिबे 1948 तो अपन माने जानचंदी हाई कोर्ट एस्टैब्लिश्ड हेतिला ओके नेक्स्ट देखो फॉर्मली इनागुरेट हेतिला 26 ऑफ जुलाई 1948 रे यस भाई भोणी माने मु पूरा कहूची 26 जुलाई 1948 रे नेक्स्ट देखो The first woman governor of Odisha was first woman governor Odisha किए थिले tell me who was the first woman governor of Odisha तेया लागुची क्लास के करिया पासना The first woman governor of Odisha was किए थिले ऑप्शन कौन अछि द्रौपदी मुर्मू शीला दीक्षित गौरी कुमारी सुशीला प्रिया गाइस क्वेश्चन टाकू टिके ट्रिकी अछि ताकू टिके त माने बुझी परिबो कि शीला दीक्षित ओडिसा रे त नुह फालतू रे त माने आंसर दियो देखो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली हमर के शीला दीक्षित अछंती गौरी कुमार रहिले या फिर सुशीला हुरिया से माने केबे गवर्नर हे ओडिसा हिस्ट्री रे से मानकर किछि ना भी नाही बट द्रौपदी मुर्मू एठी पछारिनी हु इज द सर्विंग who have served as the first women governor in Odisha एटा पछारिनी कि ओडिसा रे हमें कहि परिबा द लेडी जे की गवर्नर हेचंती ओडिसा रा लेडी जे की गवर्नर हेचंती बिकॉज़ इट इज सरोजिनी नायडू प्रेजेंट नाही ऑप्शन रे दैट्स व्हाई आमी चूज करि परिबा काहा को द द्रौपदी मुर्मू को चूज करि परिबा जे की 9th गवर्नर ऑफ झारखंड हेथिले ओके जे की ओडिसा रा फर्स्ट ट्राइबल वुमन टू बी द अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ स्टेट ऑफ एनी स्टेट लाइक झारखंड रा इन इंडिया रा जे कोन से स्टेट रा गवर्नर हेथिले क्वेश्चन देखो कोन पछा ओडिसा रो जे बिलोंग करूची क्वेश्चन देखिबो ऑप्शन सहित टिके रिलेट करिवो क्वेश्चन पछारिची बोली हु उठी की किछि भी ओडा ऑप्शन सेमिति मारिबो क्वेश्चन सहित रिलेट करिवो ऑप्शंस कोन अछि क्वेश्चन डिमांड कोन अछि ताकू ऑप्शन फुलफिल करूची ना नाही एमिति देखो बहुत सारा मिस्टेक क्वेश्चंस भी आसीबो ताकू त मानकु रेक्टिफाई करिके आंसर देबाकू पड़िबो यस नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू Which act governs urban local bodies in Odisha? Which act according हमर कोन urban local bodies एबे ही कहिथि 1950 रे हेथिला हुआ कोन हेछि अच्छा कहि भी देली एबे कहिला देखि राइट आंसर एबे कहि जदी मु देली एबे आंसर दियो वेरी गुड जाओ सब सुनि देछ ना कि तथापि पायल सुनि नाहंती हां पायल सुनि नाहंती ना कि बस जानि देली त माने सुनिछ
कान गोटे गोटे पाइच कान गोटे गोटे एक्टिक कान पाइच है तो 19 Odisha Municipality Act 1950 according कौन हेतिला the act lays down the structure, functions and the powers of municipalities and the notified area under the councils in the Odisha. Odisha Urban Development Act 1965 रे हेतिला कि Odisha Urban Development Act 1965 रे हेतिला. Is that true? एमिति किछि act हमर पास हेइनी. Even Odisha Local Governments not a real act 1993 रे हमें refers to the Panchayati Raj framework हेतिला. ताको आपण माने रिलेट करि परिबे. Okay. Your nahi कौन करूच नाकर सुनुच. So next question देखो. How many subjects were transferred to Panchayati Raj institutions under the 11th schedule in the Odisha? Yes, 1950 Odisha Municipal Act. Yes. How many subjects were transferred to Panchayati Raj institutions under the 11th schedule in Odisha? केतेटा अछि? How many subjects? Very good. जहाउ जानिछ 29. कही अलगा ऑप्शन तो मारुना सब गोटिए. हां किशोर हमर 22 मारुचंती ना किशोर 22 मारुचंती. 22 थिला 22 थिला. The 73rd amendment include कौन कोछि ना there are 29 subjects under the 11th schedule that like कौन कहि परिबा that are to be devolved to Panchayat Raj institutions और हमें कहि परिबा the PRIs. Okay. 18 जदि कहबा that related to the 12th schedule for the urban local bodies. 12th schedule हमरा मेंशन अछि और ताको हमें कहि परिबा that is the 18th subjects अछि. Clear? Okay. Next देखो. Quiz digital. Okay 29. Kisor okay 29. Next देखो. Quiz digital platforms is used for centralized land record management in Odisha. Which digital platform is used for centralized land record management in Odisha? कहा को हमें कहि परिबा ऑलरेडी तो माने नक्शा बक्सा देखुथु अप्लाई करिकि नक्शा चेक करूथु प्ले स्टोर रो डाउनलोड भी होची कोथरे कहबा yes that is the भूलेख ओडिसा रे हमें सब घर बारी पटा सब नक्शा हमें देखि परिबा कोटा कन्वर्टेड हेइछ ना नै पटा को एवरीथिंग वी कैन मॉनिटर ओवर द भूलेख ओडिसा बापा को नार अछंती जेजे बापा को नार अछि डायरेक्ट ना देखि दबो कहा नार जगह अछि. Okay, this is the official portal for the land records and कहि परिबा the ROR that कोन कोंदी ROR. Okay, the records of right the record of rights. Okay, तो भू नक्शा रे आपण मानकर कोन हुए ना provides the हमें कोन कहि परिबा गोटे मैप शो करिवो. ओके जोटा कि ROR शो करिवो ओनली मैप शो करिवो नक्शा कहिछि ना नक्शा रे कोन शो करिवो मैप शो करिवो. मोर लैंड कोन होबो ना ओडिसा ऑफिशियल लैंड पोर्टल रे मोर लैंड बोली किछि जिंस नाही मे बी अदर स्टेट रे थाई पाए. ओके डोंट हैव एनी आईडिया बट स्टिल मोर लैंड इज नॉट अबाउट द ओडिसा. देन भूमि ओडिसा दिस इज आल्सो नॉट द एक्चुअल टर्म. ओके नॉट एक्चुअल टर्म. बफरिंग होची मोर इंटरनेट बहुत ही फास्ट अछि तथाई बफरिंग होची 150 MB अछि यार. मैम अपन 9 टारू 10 टा जाके क्लास करू नांती 9 टारू 10 टा बिक्की सांगर क्लास पा नहीं होनी. से देखो पुणी तांकर डाटा सरी गला आ से मते दोष दोचंदी कि बफरिंग हो ये की कथा. अच्छा आम जियो तो भलो चली छि ए पर्यंत अंबानी का कृपारु. चलो द चीफ मिनिस्टर्स डैशबोर्ड फॉर स्कीम मॉनिटरिंग इन ओडिशा इज नोन एज what the chief minister's dashboard for scheme monitoring in Odisha is known as what? कारण CM जदि आसिला chief minister का आसिला तो obviously what CM dashboard कहबिला हां CM dashboard that is CM dashboard is an online monitoring platform initiated by the Odisha chief minister's office to track the real time progress of the government schemes and service. properly हेई परछ नै ताको ट्रैक करिया लागि कोन CM dashboard प्रमोट हेतिला. ओके नेक्स्ट ई प्रगति को रिलेट करिबो एटा हमर आंध्र प्रदेश रा डिजिटल गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म. दिस इज रिलेटेड टू द आंध्र प्रदेश. ओके ई प्रगति जति क्वेश्चन आसिला लाइक हमर कोन सीएम डैशबोर्ड द आंध्र प्रदेश हैव व्हिच स्कीम एक्जेक्टली द कॉपी पेस्ट स्कीम व्हाट इट हैज that is ई प्रगति मन रख.
तो कॉपी पेस्ट नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो who presides over the Odisha Legislative Assembly in the absence of the speaker and the deputy speaker who presides over the Odisha Legislative Assembly in the absence of the speaker and deputy speaker कहिथिले ऑलरेडी जो मेंबर को कोन ना स्पीकर स्पीकर ऑलरेडी ताको नॉमिनेट करिथिबे वो मते कोन अछि सॉरी क्वेश्चन आनिनी मो क्वेश्चन ही आनिनी अरे लाइक क्वेश्चन मो पाखरे सामना रे भी क्वेश्चन होउची ना सेति लाइक मु सेटु पढि दोछि को so who presides over the Odisha Legislative Assembly in the absence of the speaker and deputy speaker sorry Shaktiman ebe dekha gala ebe answer दियो please who presides over the Odisha Legislative Assembly in the absence like of the speaker and deputy speaker मैम ओडिशा करंट अफेयर्स ऊपर किछि क्वेश्चन आनंद प्लीज यार तो मैंने बर्डन बढ़ाई चलीच ओके विल ट्राई ओके तमनकर बहुत जल्दी 6 मंथ रे करंट अफेयर आसी जोरा कि ओडिशा को इंक्लूड करके तापे वरीड होनी मे बी 2-3 डेज भीतर तमने पाई छी बट एट ए टाइम 6 मंथ रे करंट अफेयर्स हमर न्यू टीचर आसुचंदी आपण मानन को सर माने ऑलरेडी हिंस देइथिबे काली ही आपण जानि परिबे न्यू टीचर तो जैन टीम में कहि परिबा लाइक करंट अफेयर्स नियंती जीएस नियंती मिक्स अछंती तो तांको विषय रे आपण माने टिके थांतु एक्साइटेड हे कि थांतु काली डायरेक्ट जानिबे 5टा बेले मोर क्लास रहइबो 2टा रु 5टा रे सल्ला मात्रे कि सरकर लक्ष्य अच्छा कहि देली कि मेल एंड फीमेल तो जानि देला फिर who is she नहीं who is he सर कहि देली ना सर का ना सॉरी मते कहिबा को मना कराइछ कि मैम आपण एकला पिल्ला मान सहित एते गपुचंदी ना भूल से जेमिति न कुआंती कहि परिबेनी सर माने मना करछन यस न्यू टीचर आसीबे जोडा कि पूरा त माने आहुरी खुशी हेजिवो तो को राइट आंसर कोन होबो ना दिस इज अ मेंबर नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर अंडर द लेजिस्लेटिव लाइक प्रोसीड्यूर्स हम कहि परिबा when both speakers and deputy speaker are absent the speakers nominates a member to preside over the session okay governor केबे स्पीकर हमर कोन असेंबली सेशन को आसीबेनी ओनली फॉर हमर कोन ईयर ऑफ फर्स्ट सेशन रे कोन ताको हमर कोन इंट्रो रे से आसीबे डिलीवर पाई मैम आसीबे ना सर ओके मैम कोन कहछि मैम आसीले भलो के कहछि मैम आसीले भलो काई खराब कोन हबो त माने क्लास देखियोनी हां त माने माने हमें मना करथु कि तमे क्लास देखनी बाया है कि देखियो क्लास आउ अछि ना आ 8टा क्वेश्चन अछि सरी जियो 8टा क्वेश्चन अछि जल्दी जल्दी साथ को which article provides the council of ministers in Odisha shall aid and advise the governor what will be the right answer को article under रे हमर कोन ना advise करी हबो governors को advise the governors that is under article 160 केते ना under article 163 under article very good under article 163 the Indian constitution कोन कहूची ना says the governor shall act on the aid and advice of the council of ministers applicable to Odisha and other states okay article 164 कोन कहूची ना deals with the appointment of CM and minister appointment of CM and minister okay 166 कोन कहूची 166 कोन कहूची नो मैम न्यू सर आसिले भलो नुह न्यू मैम आसिले भलो के कहूची और ठीक अछि त माने जति एक्सेप्ट करियो मोर कोन प्रॉब्लम आनी देबा इटा ओटे कथा न्यू मैम को आडे मैम करे से ओडिसा जे के पढे हैला मो अलगे कोनटे पढेबी आ so को article 166 कोन कहूची ना this is the procedure for executive action this is the procedure for executive action that is the article 166 under article 168 refer to what now this is the constitutions of the state legislatures okay ओडिया पढेबी मु बाया हे गलन मैंने बोते next चला next what percentage of seats are reserved for women in PRIs in Odisha as per the 2002 amendment तो भलो कथा
तो भल कथा ना कंपटीशन बढ़ले कौन अच्छे तुम मान को रिसोर्सेस भल मिल ना तुम मान को क्लास बेटर प्रोवाइड हम ना दैट्स इट बाकी जी भल कंटेंट देला तुम मैंने देखिबो सेटा खुशी रो कथा ना मैम चंदन सर कुआडे गले चंदन सर तांको घरे अछंती कुआडे गले माने चंदन सर कुआडे गले माने कोन रो कोटे बांधी के रखि दिली कुआडे सर पळेले तो को राइट आंसर कोन होबो ना दैट इज केते 50% ऑलरेडी कहिची ओडिसा अमेंडेड इट्स पंचायती राज एक्शन इन 2002 ओके फर्स्ट 33% थिला देन एटा को इंक्रीज करी कोन ना 50% करिछि राइट नेक्स्ट व्हिच स्कीम नेक्स्ट देखो व्हिच स्कीम was launched to empower women led किछि भी तो माने पचारि जो हस लागला कोन करछ मैम आपन के एते सारा डाटा केमिति मने रखिया को पड़ियो दैट्स व्हाई आई एम हियर ना दैट्स व्हाई मैं पढौची ना तो हुआ व्हिच स्कीम वाज लॉन्च्ड बट तुम माने एते फिक्चर करछो अधा डाटा मो माइंड रु पळोची मु जते चाहूची रिलेट करी तुम माने को मने पके की देबी बट तुम माने कर सब कोन कोन कमेंट करूछो बाउंस इज मो माइंड जते की दोउची जस्ट कहिबा को गले 40 to 50% दोउची आहुरी 50% बाउंस इज so which scheme was launched to empower women led self help groups with bank linkage in Odisha को बैंक लिंकेज इन ओडिसा में कोन कहि परिबा ना मिशन शक्ति लोन स्कीम अछि ऑप्शन रे मिशन शक्ति लोन स्कीम बाकी कालिया योजना विषय रे कहिबा दरकार नै बीएसकेवाई विषय रे कहिबा दरकार नै कालिया योजना हमरा कोन फार्मर्स को फाइनेंशियल लाइक स्टेबिलिटी पे करा होची ना को मात्र वोट पे सब होची कालिया हो सुभद्रा हो हैला त माने भी जानछ मु भी जानछ तो बीएसकेवाई दिस इज द हेल्थ इंश्योरेंस ताकू साइड कर दियो पीठा कोन करूची पीठा ऊपर एग्जाम रे क्वेश्चन आसी पारे दैट फोकसेस ऑन द ट्रांसपेरेंसी एंड अवेयरनेस इन एनी फील्ड हमर कोन करूची दैट इज पीठा डज दैट ओके दिमाग रा 20% नै कोन करियो मैं कोन करियो मूवी एसी दे देबी नै जीवा तो को ओडिसा's लोकायुक्त is empowered under which act ओडिसा लोकायुक्त केबे empower हेथिला को act under empower हेथिला टेल मी ओडिसा लोकपाल एक्ट 1988 ओडिसा लोकायुक्त एक्ट 2014 ओडिसा विजिलेंस एक्ट 2011 और ओडिसा एथिक्स कमिशन एक्ट 2005 देखो एथिक्स कमिशन को आपण माने इजीली एलिमिनेट करि परिबे इवन विजिलेंस को भी एलिमिनेट करि परिबे ओके टेस्ट बीटा ऑप्शन रहिला ओडिसा लोकपाल एक्ट एंड लोकायुक्त एक्ट ओडिसा लोकपाल एक्ट 1988 ताकू हम कोन कहि परिबा ना ताकू रिप्लेस करि देछि केबे ना ओडिसा लोकायुक्त एक्ट 2014 ताकू रिपील्ड करि देछि ताकू रिप्लेस करि देछि के 2014 वाला एक्ट ए पिला आशीष कोन होजे तुम मानकर लास्ट को देखिए तुम मान का मेसेज एबे फ्लो रे अछि ना ब्रेक करबे तो ओडिसा विजिलेंस एक्ट 2011 ने किछि एंती अछि कि देयर इज नो सच लाइक एक्ट एग्जिस्ट इन द ओडिसा ओके नेक्स्ट देखो which article mentions the appointment of ministers in Odisha मिनिस्टर कर अपॉइंटमेंट होची को अकॉर्डिंग which article mentions the appointment of ministers in Odisha को अंडर आर्टिकल chief minister and ministers को article under article 164 under article kete 164 is that clear yes under article 164 states the governor appoints the chief minister and the other ministers including the total Odisha 153 कोन कहूची refers to the office of the governor 153 that's office of the governor को refer करूची 155 कोन करूची 155 मु गोटे लेखला को तुम माने सब लिखि देबा कथा एते लड़सवा हेले हबो ना को गवर्नर्स अपॉइंटमेंट पांगे कोथि 155 रे सो गवर्नर्स अपॉइंटमेंट रिलेट करा तो आर्टिकल 167 कोन कहूची ना दिस इज द ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर रिगार्डिंग कम्युनिकेशन विथ द गवर्नर ओके
चीफ मिनिस्टर कम्युनिकेशन लाइक गवर्नर को सहित करिवे अंडर द आर्टिकल 167 ओके टाइप करी हाथ बिंधा हेलानी याडू सियाडू कमेंट कला हाथ बिंधा होनी ना हाथ पूरा ऑटोमेटिक चलुची नेक्स्ट हुआ Pitha scheme in Odisha stands for very good question and important one. Mark my words, this is the very important one. Kua Pitha scheme in Odisha stands for Pitha रहुची कौन? यार आंसर जे दबा मो तरफ टू गोटे चॉकलेट. यार आंसर दिए दबा मो तरफ टू चॉकलेट. जे फास्ट दबा. जे दबा माने समस्त दो दो चा. फास्ट किए देइछे. अर्चना बल ना 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 चित्तरंजन दास देइचंती फर्स्ट क्वेश्चन आंसर ओके मिस्टर दास तमे चॉकलेट पाइबो ओके दैट इज द पीपल्स empowerment enabling transparency and accountability that is the pitha scheme and pitha scheme amara kon karuchi this is a flagship awareness campaign to the publicize government awareness or government schemes jete अछि ताको मॉनिटर करबा लागि पिठा स्कीम आछि clear next the class seems good and it seems good to study your study style is also different but there is a lot of disruptions in the class so it doesn't seem good for that what I can do ila ta asibe hi semdi so who was the first chief minister of Odisha post independence who was the first chief minister of Odisha post independence era re post independence कहिछि post independence era रे कुहा माथे किए हेबे 1946 रे हेथिले and again 1956 46 56 रे हेथिले किए हेथिले 46 रे and 56 रे हेथिले मते भी चॉकलेट तिनाली ओके तिनाली तम नाटा मते भारी भल लागे सेति पय तमु चॉकलेट मिलियो आ एते जण की चॉकलेट बांटी परिबिनी मु कांगाल हिछि ना कोन चॉकलेट दमन के एते बांटीबी को हरे कृष्ण महता that is Dr. Hare Krishna Mahata became the first chief minister of Odisha after independence first serve kebe karithile na 1946 रे first serve karithile then again elect हेइथिले 1956 रे माने पडुछि 1956 रे नवकृष्ण चौधरी हमें केबे हेइथिले ना after महताब नवकृष्ण चौधरी in that period suppose 46 ରୁ 56 अछि 46 रे करे हेइथिले then 56 रे हेइथिले तो in between 1950 ରୁ sorry 1950 ରୁ 56 ए पीरियड भीतर हमर कोन हेतिले के हेतिले नवकृष्ण चौधरी सीएम हेतिले बिजू पटनायक से तो बहुत लेटर आस्तिले ता परे पूरा एंड रे कर दियंतु 1961 रे आस्तिले 1961 रे आस्तिले ओके देन राजेंद्र नारायण सिंह दो ता परे आई थिंक आस्तिले 1965 या 67 एग्जैक्टली मने पडुनी 1965 टू 67 ओके chief minister but not the first next देखो next and the last question okay अपेक्षार अंत घटिला कोन से सब प्रश्न आपण मानकर सम्मुख रे आसिला ओडिया ठीक अछि त कहला ना ओडिया पढाय पय the Odisha Right to Public Service Act the ORTPSA was enacted in which year good night Kishore good night आ तम मेसेज जमा देखिबिन तमे क्लास रे प्रेजेंट रहिले भी सुनिबे so this is a good night for you for the Odisha Right to Public Service Act the ORTPSA was enacted in which year that is 10 11 12 or 13 initially 10 रे हमर कोन ना ड्राफ्टिंग कंडीशन ड्राफ्टिंग स्टेज रे हमर कोन ड्राफ्टिंग स्टेज रे हमर थिला 2010 रे ड्राफ्टिंग कंडीशन रे थिला then it enact hela kebe na 2011 re it enact hela so the Odisha Right to Public Service Act 2011 ensures what na time bound delivery of essential government services to the citizens with provision for penalties in case of delays but kiye penalties dochi kiye manuchi koni but chaluchi like amara kono 2011 act according amara Odisha Right to Public Service Act under it ही chaluchi clear but eta implement kebe heitila start kebe heitila 10 रे ड्राफ्टिंग हैला 11 रे लॉन्च हैला 12 रे स्टार्ट हैला एमिति मन रखा implement केबे हैला ना 12 रे हैला implement
on 2012. This is our Odisha government. Thank you slide Anini. So this was the last one. कौन कार क्वेरीज थिला टिके कहि देलो बाकी गुड नाइट एवरीवन जो मानकर क्लास रो लेफ्ट हेबार अछि गाइस तमाने जाई परिबो एंड यस पीडीएफ्स एंड रे मु शेयर कर देबी ग्रुप पे डोंट वरी ओके कौन क्वेश्चन थिला अमित थैंक यू मैम फॉर द ब्यूटीफुल सेशन थैंक यू सतीश तमे कहिलो माने हेला को सतीश थैंक यू मैम फॉर द इंपोर्टेंट सेशन गुड नाइट मैम टेक केयर यू टू टेक केयर मधुस्मिता थैंक यू ऑल ऑफ यू बाघ गुड नाइट कही देची गुड नाइट सो जा सो पड़ गुड नाइट टेक केयर जय जगन्नाथ राधे राधे थैंक यू कौन चित्तरंजन मोर थिला कहिले भोक लागुनी पाई मैम मोर थिला कहिले भोक लागुनी पाई मैम बुझी पालिनी चित्तरंजन कौन कहूछ हसिकी क्लास वाइंड अप कले कौन हम तम माने को भल से निद हो यदि मु हसिकी क्लास वाइंड अप कली तम माने सुकून से सोई परिबो देन मते कुहा मु एकदम 5 मिनिट जाय हसिबी नॉन स्टॉप हसिबी हां मैम गोटे मिनिट टिके अमित कर क्वेश्चन पढ़ी देबा हैला तो मालिन गुड नाइट सोई पड़ तमे अमित कर क्वेश्चन टे देखिया से कोन टे लिखसंदी अरे यार कर्मा कर्मा का मेसेज आगे टिके देखुची अमित तापरे तम मेसेज देखिबी हैला टिके रुआ मैम कल क्लास रे क्वेश्चन नंबर 13 थिला हु कैन इंट्रोड्यूस मनी बिल इन ओडिसा अपन आंसर देले फाइनेंस मिनिस्टर बट आंसर एनी मिनिस्टर विथ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर हबा एनी मिनिस्टर विथ द प्रायर फाइनेंस मिनिस्टर हबा कथा ना राइट आंसर शुड बी फाइनेंस मिनिस्टर बिकॉज़ फाइनेंस मिनिस्टर हमर सर लाइक एबे तो करंटली हमर कोन चीफ मिनिस्टर ही फाइनेंस मिनिस्टर ओडिसा अछंती बट आंसर एनी मिनिस्टर विथ द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर हबा मनी बिल इंट्रोड्यूस करिया पे गवर्नर को तो प्रायर परमिशन दरकार हुएनी आई थिंक डायरेक्ट परमिशन प्रेसिडेंट को आसे जोटा कि डायरेक्टली गवर्नमेंट को पाखु सॉरी गवर्नर को पाखु आसे एंड सी बस ताकू सैंक्शन करंती कि मनी बिल पास हो बट जदी लेटर ऑन तमे कहउछ एग्जैक्टली परमिशन विषय रे देन कर्म सॉरी फॉर दैट मुदा का आउथर रिसर्च करी के तमन को कमेंट सेक्शन में मेसेज टा पिंग कर देबी ओके आज क्लास रो कमेंट सेक्शन में क्लास सरला परे मु टिके रिसर्च करबी एंड सेटा को पिन ऑफ कर देबी से मेसेज टा ठीक अछि कर्म आर यू सैटिस्फाइड विथ दिस मैम आज क्वेश्चन ओके एबे अमित कोन कहिले मैम मु एई डोमेन रो नुह आई एम फ्रॉम एआई एंड साइबर सिक्योरिटी टेक बैकग्राउंड तो मोर आरआई एग्जाम अछि अगस्त 25 ऑलमोस्ट 33 डेज अछि जीके एंड पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री रे मु जीरो नॉलेज सो केमिति कवर अप करिबी प्लीज माने एते कम दिन एग्जाम अछि एंड तमे एबे कहउछ जस्ट आई हैव जीरो नॉलेज बेसिक किछ जानिबा दरकार ऑल ऑफ सडन तो मु तो माने कोन माने कोंदी ना बाटी की तो पियाई परिबिनी जस्ट बिकॉज़ कि मु मोर बेस्ट टू बेस्ट दे परिबी एंड एते कम दिन रे गोटे स्टूडेंट को तो फोकस करके पढ़ाई परिबिनी ना अमित तो सब स्टूडेंट्स को देखिया को पड़िबो राइट बट स्टिल तमे ग्रुप रे अछो अमित टेलीग्राम ग्रुप रे तमे जॉइन अछो संजीत रंजन स्वाई मनी बिल कौन टिके बुझे देबे मैम मनी बिल भी बुझे बारे कौन अछि लाइक दिस इज अ सेशन मनी बिल रे हमरो डिफरेंट टाइप रो कोठी कोठी केति के बजट आसे एई लाइक को सेक्टर रे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज मानकर सैलरी रे केति जीव पेंशन रे केति जीव डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्टर जेति के अछि नॉन गवर्नमेंट सेक्टर अछि कोठी ओडिसा गवर्नमेंट हमरो केति की इवन इंडिया रे भी जते बेले मनी बिल आसे को सेक्टर रे हमें केति की गवर्नमेंट रो पैसा को कोन नियोजित करिबा ता ऊपर ही मनी बिल आसे ता ऊपर ही मनी बिल आसे मैम आज ओडिसा हाई कोर्ट रो चीफ जस्टिस मानस रंजन पाठक ओथ नेले ग्रेट न्यूज जस्ट ए ग्रेट न्यूज सुमालिन आज करंट अफेयर्स रे सर एटा क्लास देथिले कि आज करंट अफेयर्स रे सर देथिले कि क्लास एटा अमित तमे ग्रुप रे अछो देखिबा ट्राई करूची किछ जदी हेई परिबो काली नुह आज मॉर्निंग रे पचरी यस मैम जॉइन अछि कोन हेई परिबो मैक्स टू मैक्स तुमको पीडीएफ शेयर करि परिबी बट तमे एते कम दिन रे पढी कि मने केमति रखिबो
जेति कि जानिचो लास्ट मोमेंट रे किछि न्यू जिंस जानिबा को जमा ट्राई करो सेतिरे जेति कि जानिचो जेति कि नॉलेज ऑलरेडी एक्जिस्टिंग नॉलेज अछि सेगुडा तमरा बाउंस हो बेटर कि जेति कि जानिचो ताको रिवाइज करो अगेन एंड अगेन दैट कैन हेल्प यू आउट दैट्स द ओनली थिंग दैट कैन हेल्प यू गुड नाइट मैम न्यूज़ अपडेट्स अच्छा न्यूज़ अपडेट्स रे ओके देन काली आसी जीवा मे बी एंड यस तमरा करंट अफेयर्स क्लास भी शिफ्ट होउची जोटा कि मॉर्निंग 7 रु करंट अफेयर्स क्लास भी शिफ्ट हो ओके सेही तो एंड मोमेंट रे अमित कोन करि परिबा रेस्ट किछि नेक्स्ट किछि एग्जाम आसुची देन आई विल हेल्प यू आउट डेफिनेटली आई विल मैम कौन योजना गोपबंधु योजना ए सब मनी बिल आसीबो मैम ना ना योजनाटा स्कीमटा गुटे सेपरेट देखिए मु ट्राई करछ त मानकर स्कीम क्लास जदी हबो काली तो हबनी एते सारा कम पीरियड रे केते कवर अप करियो स्कीम रो देखिबा कार को दिन एग्जाम अछि भितरे आहुर तो 40 दिन एग्जाम चलिबो ना तो ता भितरे सारी देबा हैला मु ट्राई करछ ओडिसा रो जत्ते भी स्कीम अछि हमर कोन से उज्जवला स्कीम ठु आरंभ करी जत्ते प्रकार स्कीम अछि सब स्कीम को आनिबा Ma'am, tomorrow's 5 hour class is no small task, but your dedication and energy always inspire you. 5 hours class, mane just imagine. Kali 5 hours nahi, kali 3 plus 1 plus 1, 5 puni study aikure class mora achi 2 hours, 7 hours ro class. Just imagine. ना ना डिपेंड करे मोर भोक ऊपर जदी जल्दी भोक लागिला मु जल्दी डिनर करि दिए देन क्लास निए जदी किछि संध्या रे टिके हेवी स्नैक्स करि दे छै देन टिके लेट रे करे दैट्स इट मैम लुसेंट एंड तरुण गोयल भितर टिके पई कोउटा भलो हबो मैम लुसेंट मु फॉलो करिनी सो काई तुमको मिछरे गोटे बाबा देबी कि कोन बड़ बड़ कथा कहबी मु तरुण गोयल को ही फॉलो करछि फ्रॉम द 2018 रो एबे तक तो मु तो प्रेफर करिवि कहबी कि हां तरुण गोयल को ही फॉलो करो रेस तुम माने देखो व्हाट विल बी बेटर फॉर यू एनसीईआरटी इज बेस्ट सतीश कहउचंदी एनसीईआरटी इज बेस्ट तो गो फॉर विथ दैट ओके ना मु लाइक घरे क्लास करे स्टूडियो जाए बट घरे क्लास करे ओके किछि लंचिंग अछि किछि एक्स्ट्रा क्लास जदी रिकॉर्डिंग वगैरह रही जाउची देन स्टूडियो जाए एल्स मु घरु ही क्लास करे ओके मैम स्टडी आइकुरे संडे रे मैराथन आसे आपणकर बाकी दिन रे टाइमिंग कोन अछि दिन रे नाही मोर ऐप क्लास रहउची साइंस एंड टेक मु कवर अप करछि जेतु मोर ऐप क्लास फ्री क्लास किछि नाही फ्राइडे एंड वेडनेसडे बोधे थाए बाकी डेली क्लास रहउची आफ्टर आपणको घर ढेंकानाल की मो लैंग्वेज रो किछि डिफरेंस जणा पड़छि कि ढेंकानाल रे केमती हेबा दरकार यस मो घर ढेंकानाल आउ किछि क्वेश्चन अछि ना क्लास वाइंड अप कर देबा एबे कोन घरे क्लास करछंती ये सेटा मो घर बैकग्राउंड को त माने जानि परथुवा बैकग्राउंड तो माने जानि परथुवा स्टूडियो रे त एमिति किछि आडो साडो देखा जायनि स्टूडियो शुड बी लाइक हमरा बहुत क्लीन एंड क्लियर देखा जाय ओके सो देखा जाउथो त माने बैकग्राउंड यस आरआई पर अपकमिंग एग्जाम आसुची हमको बैक टू बैक कहिदली गोटे पॉइंट रु केते बेले भी ड्रॉप डाउन करबनी जदी गोटे पॉइंट को सपोज हम माने तमर एटे 70% दे देछो एंड गोटे पॉइंट को आसी पहुंच जेछो सपोज ए पॉइंट रु बी पॉइंट को आसी पहुंच जेछो आफ्टर गिविंग योर 100 और आफ्टर गिविंग योर 70% देन जदी सेठी तमे डिमोरलाइज हे गेला कि अरे मोर आरआई तो हेलानी देन आ कोन करबे छाड़ा से एग्जाम किछि देबिनी व्हाटएवर जदी किछि डिमोरलाइज हे गला देन पुणे आ 3 मास पर जदी चाहिबो भी एग्जाम प्रिपरेशन करिया को तमरा से 80 रु ट्राई करबनी पुणी 0 रु ट्राई करबो पुणी भाबो से 0 रु 80% तमे जाइछो केते टाइम लागिसी तो पुणी 0 रु स्टार्ट करबो पुणी 80% को जीवो पुणी 80% रे डिमोरलाइज होबो देन आसीबो पुणी 0 को तो बेटर से 80 रे ही रुहो डिमोरलाइज होनी आ अल्प बाट अछि 20% मात्र ताकू टिके स्ट्रांगली फेस करो टाइम ता ओवरकम हे गले 100 हेले द जॉब इज योर्स ओके हाँ हाँ मैम हिस्ट्री रु केते परसेंटेज आसीबर चांस अछि मैम प्लीज कोन तो आपन को बैकग्राउंड थिला साइंस आर्ट्स बिकॉज़ यू हैव बोथ ऑफ फुल नॉलेज मोर साइंस बैकग्राउंड आई एम फुल्ली साइंस एंड बॉटनी बैकग्राउंड द प्लांट साइंस ऊपर आई हैव डेप्थ नॉलेज आफ्टर दैट कंप्यूटर साइंस जेहेतु करिछि मु बीटेक तेनु ता ऊपर पढा पढी करिकि टिके टिके नॉलेज अछि
बीटेक पिला जानिछ केमिति एग्जाम दियंती स्टिल टिके आइडिया अछि ओके ओके मैम जीवा एबे मु तो नगले तुम माने जीवनी ना तो मते जीवा ही पड़िबो तुम माने एमिति गप्पु थिबो तापरे सकाळे सर माने क्लास देखि कहबे एटा को क्लास चलीथिला गप्प क्लास चलीथिला बीटेक कोन पे गले बटानी पर खुशी लागिला इच्छा हैला खुशी लागिला इच्छा हैला बटानी ऊपर क्लास यस टोटल बायोलॉजी ऊपर मते भल लागे बायोलॉजी पढिया पे दैट्स व्हाई डायरेक्ट पचारना मैम अपन एज केते मैम अपन 10th के पास दीजिए मैम अपन 12th के पास दीजिए डायरेक्ट पचार दे एज केते चलो चलो बहुत गपिला एबे नहीं मोर भी बटानी वेरी गुड ओके चलो बाय बाय टेक केयर बहुत गपिला आज की बहुत मोर पार्टी Thank you guys. Thank you. Have a take care of yourself. But first of all, do prioritize your parents first. This should be your first priority. No one else. Thank you. Thanks so much. Have a good day.